Good afternoon, children. Today we are going to start with coordination chemistry. So let us begin and see what kind of questions and what kind of concepts are going to be involved in case of coordination chemistry. So let us begin, children. First question on your screen. Everyone needs to pause and try. Okay, but before that, I'll just discuss some concepts with you. So talking about coordination compound. So okay, so this is a coordination compound. So what is the difference between a coordination compound and a double salt? First we'll see that. So what happens when you break a double salt is that whatever ions you get, whatever individual ions you're getting, so you'll get simple ions. You're going to get simple ions. But here when you break it, what are you going to get? You're going to get 4K plus. Along with that, FeCN6, 4 minus. So you're getting a complex ion. So you're getting a complex ion, right? So that's why children, this is called as a coordination compound. Now what all things are there in coordination compound, that also we are going to discuss. Now what happens in case of coordination compound, children? We have a central metal atom, right? We are having a central metal atom. Yes. Now this central metal atom is generally a D block element. Which is bonded to some species which are called as your ligands. These ligands may either be negatively charged or they have lone pair of electrons. Yes, so talking about coordination compound, so we have the central metal atom, which is generally a D block element, which is bonded to some species, which is your ligands. They are negatively charged or they have lone pair of electrons, right? Now, this is your coordination sphere. Now, apart from this, we see that apart from inside the bracket, there is something outside the bracket which is called as your counter ions, Why are they called as counter ions, children? Because we saw that whenever this breaks, if this is going to be plus, then you are going to get FeCN6, 4 minus. So if this is plus, this is going to be minus. So they are of different charges. Hence they are called as counter ions. They're called as what ions? Counter ions. Okay, these ones are called as your counter ions. Okay, so now the complex can be of two types. Okay, the complex can be of two types, and what are they? One is homoleptic, other is heteroleptic. Okay, on what basis do we classify compounds at homoleptic and heteroleptic? Based on ligands. Okay, based on ligands. Like for example, if you see in a complex, all the ligands are same. Okay, same type. Then it is called as homoleptic complex. In heteroleptic complex, we have different kinds of ligands.
So these questions, children, they were asked in whatever questions we are going to discuss. They were all asked in different shifts of your JEE Mains 2024. Okay. They were asked in JEE Mains 2024. Okay. This was something that was asked. Okay. So now you can easily, this is a very easy question, of course. So you just had to know what homoleptic meant. As you can see, in the first case, we have NH3 and Cl. So we are having two types of ligands. Yes. So that is not possible. Again, NH3 and Cl, two types of ligands. So this is not possible. NH3 and Cl, this is again not possible, and this one is possible, right? Because only cyanide is there. Only cyanide is there, and that's why this is called as homoleptic. This is called as homoleptic. Yes? Okay. So this one, children, is going to be the answer. It is going to be your homoleptic complex. Then what the rest of the followings are, children? They are your heteroleptic complex. And from here you can see you have nickel, cobalt, iron. These are all your central metal atom. D block element. Yes. Apart from this, you are having the species which are attached, either having lone pair or negative charge. For example, ammonia has lone pair, whereas this is chlorine is having a charge of -1. This is -1. Cyanide is having -1. So your ligands can either be negatively charged or they can have lone pairs, right? Okay, so this is going to be your thing. Next question on your screen, and everyone needs to pause and try this question. Okay, children. What is the question here? The question here is, which of the following compounds show color due to DD transition? क्या बताया गया है यहाँ पे? कौन सा ऐसा कंपाउंड है यहाँ से जो कि DD ट्रांजिशन दिखा सकता है? टॉकिंग अबाउट डी ब्लॉक, चिल्ड्रन, डी ब्लॉक में हमारे कितने, talking about D block, children, in D block we have 5 orbitals, right? Yes. Okay. And what are those 5 orbitals, children? We have dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. These 3 set of orbitals, the first 3 set of orbitals are called as your T2G orbital. Yes. The second, these 2 set of orbitals are called as your EG orbital. They're called as EG orbital. For example, in case of your octahedral complex, and another is a tetrahedral complex. Okay, we have 2 types of complex. Here when we talk about these kind of things, we are talking about just 2 types of complex here. That is your tetrahedral and octahedral complex. In case of octahedral complex, children, this T2G lies below, EG lies above. Similarly, in case of tetrahedral complex, we have EG lying above, EG lying below, and T2G lying above. Yes.
So whenever what happens is there is an electron here, and on gaining some energy, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जाएगा। ये कहाँ जाएगा? अभी यहाँ पे था, यहाँ से एनर्जी आने पर वो कूद के ऊपर चला जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये डीडी ट्रांजिशन होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीडी ट्रांजिशन। और जब ऐसा होता है तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? कलर। क्या देखने को मिलता है? कलर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी। और यहाँ पे हमारे कुछ ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, टी टू जी ई जी। तो कहीं से भी टी टू जी ई जी टी टू जी जो भी तुम्हारा ट्रांजिशन होता है वो तुम्हारा डीडी ट्रांजिशन होता है। तो क्वेश्चन ये है कि तुमको पता कैसे चलेगा कि डीडी ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमको एक चीज यहाँ से ये पता चला कि कभी भी कलर का बातें हो रहा हो। किस चीज का बातें? कलर का बातें हो रहा। कलर का बात हो रहा है, इसका ये मतलब है वी आर हैविंग डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब तुमको ये पता करवाना है कि डीडी ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। डीडी ट्रांजिशन वहां पे होता है वेयर देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेयर देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, ओके। तो अभी क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल फाइंड आउट वेयर देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल K2Cr2O7, okay, talking about K2Cr2O7, okay. So here we are having 2K plus Cr2O7 2 minus. What do we have, children? We have 2K plus and Cr2O7 2 minus, right? Okay. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? We'll see that क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है नहीं पता हमको, पर दो क्रोमियम है तो 2x। ऑक्सीजन का चार्ज हम सबको पता है क्या होता है बच्चा लोग? ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस का 2। 7 इंटू माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे एंटायर चार्ज जो है यहाँ पे माइनस का 2 है, राइट। 2x minus 14 equals to minus 2, which implies 2x equals to minus 2 plus 14। 2x बराबर 12, यानी कि x बराबर प्लस का 6। x बराबर कितना? प्लस का 6। ओके, नाउ व्हाट यू हैव व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 6? प्लस 6 मतलब लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। टॉकिंग अबाउट क्रोमियम, यहाँ पे अगर हम क्रोमियम का बात करेंगे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे लोग? 24। यस, 24 होता है। यस, सो इफ आई राइट हियर, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आर्गन 18 4s2 3d4, ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे नहीं लिखते हैं, राइट। ये एक स्पेशल केस है जहाँ की ये 4s1 और यहाँ पे 3d5। ठीक है, ऐसा है। जब हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग? आर्गन हो जाएगा। और डी में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, डी में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो अनपेयर्ड पेयर्ड का बात ही नहीं आएगा। सो नो इलेक्ट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन, सो नो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल हियर। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पेयरिंग का बात बाद में होगा, तो नो इलेक्ट्रॉन्स हियर। सो अगेन देयर इज नो डीडी ट्रांजिशन हियर, राइट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे CuSO4 है, वाटर का तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये तो 0 है। CuSO4 मतलब कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस, तो कॉपर जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा लोग, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 29 होता है। हाउ डू वी राइट? वी राइट इट एज आर्गन 4s1 3d10। ठीक है, ऐसा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Cu2 प्लस का क्या हो जाएगा? आर्गन
3D9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3D9 हो जाएगा। तो जब ये 3D9 हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, जब ये 3D9 हो जाएगा, तो वी कैन सी दैट 3D9 को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करें, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू अंडरगो डी ट्रांजिशन एंड दिस इज गोइंग टू शो कलर, राइट। और ये ब्लू कलर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी चार्ज 2- होगा, क्रोमियम का चार्ज 2- है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। यू कैन ट्राई एंड सी, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम लोगों का आंसर, ठीक है। तो क्या बातें याद रखना था यहाँ से, ये बातें याद रखना था कि डी ट्रांजिशन है मतलब कलर दिखाएगा, और ये तब होगा जब तुम्हारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको दिया गया है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट चिल्ड्रन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको ट्राई करो सब लोग, टेक अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा चीज का बातें किया जा रहा है बच्चा लोग, कुछ यहाँ पे लिखा गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका ये मतलब होता है जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो हम लोग इनर डी को यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है ये हम लोग एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका ये मतलब होता है वी आर गोइंग टू यूज द आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल को हम लोग यूज करने वाले हैं। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स को मतलब यहाँ पे जो सारे के सारे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, राइट। कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसको हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलने वाले हैं। तो अभी क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है CO NH3 होल 6 3+, ऐसा कुछ दे रखा है, राइट। दिस NH3 ये एक कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चा लोग, कोबल्ट के
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कैसा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या मतलब होता है? ये क्या करवाएगा? ये पेयरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाया। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ये 0 है, X + 0 टोटल चार्ज यहाँ पे +3 है, यानी कि यहाँ पे X बराबर +3। तो ऐसे हमको पता चला कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, राइट। तो अभी कोबाल्ट का क्या होता है? 27 होता है, राइट। तो वी हैव आर्गन 18, 4s2, 3d7। यस, अगर हम लोग +3 स्टेट में देखें तो क्या होगा? यहाँ से 2 और यहाँ से 1 चला जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 3d6। क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चा लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज 3d, 4s, 4p, दिस इज 4d। तो ये वाला जो d है बच्चा लोग, दिस इज योर इनर d। यहाँ पे 4d भी है, दिस इज योर आउटर d। ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चा लोग? वी आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बाकी जो है वो लोग भी पेयर हो जाएंगे। तो एक पेयर होके यहाँ पे आ जाएगा, एक पेयर होके यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 2 जगह जो है हमारे लिए खाली हो जाएगा। ठीक है। अभी NH3 है, तो NH3 आके NH3 को जगह चाहिए था, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया D2sp3। क्या हो गया बच्चे लोग? D2sp3। D2sp3 का ये मतलब हुआ कि हमने इनर D को यूज किया है, राइट। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाँ ये हमको सही दिख रहा है। स्पिन फ्री है क्या? ये स्पिन फ्री का ये मतलब होता है जहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। क्या यहाँ पे आपको अनपेयर्ड दिख रहा है? नहीं। तो ये वाला तो गलत हो गया, राइट। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं है। पर स्पिन पेयर्ड है, इनर ऑर्बिटल है। तो अभी इसको देखना पड़ेगा हमको। क्या देखना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा, राइट। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बच्चा लोग? ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्योंकि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये नो पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे? हम लोग थोड़ा देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। यहाँ पे x है, f का -1, तो 6f है, तो -6 बराबर -3, यानी कि x बराबर -3 + 6 बराबर f यहाँ पे +3 स्टेट में ही है। ठीक है। +3 स्टेट में है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, राइट। जैसे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन लिखते थे, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी अगर F6 लाना है तो F तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो F के लिए जगह क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इट इज sp3d2। तो ये क्या कर रहा है? ये आउटर कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी है। क्या ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है? नहीं है। तो ये वाला स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होने की वजह से तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या सबको ये चीज समझ में आया कि कैसा होता है ये वाला चीज? ठीक है, कैसा होता है ये वाला चीज? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ? वीक फील्ड लिगेंड था, नो पेयरिंग। यहाँ पे जनरली NH3 जो होता है वो एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, तुम्हारा जो वाटर होता है, तुम्हारा जो वाटर होता है और जो तुम्हारा क्या होता है NH3 होता है, वाटर होता है और NH3 होता है, तो ये लोग कैसे होते हैं बच्चा लोग? दे आर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ओके,
मॉडरेटली स्ट्रांग मतलब ये कभी कभी स्ट्रांग की तरह बिहेव करेंगे और कभी कभी वीक की तरह बिहेव करेंगे। तो याद तुमको ये रखना है कि जब तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? कोबल्ट का बात कर रहे हैं। कोबल्ट का जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो तुम्हारे जो मॉडरेटली स्ट्रांग लिगेंड हैं तो वो लोग स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करना चालू हो जाते हैं, राइट? स्ट्रांग लिगेंड, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे NH3 एक मॉडरेटली स्ट्रांग लिगेंड है, एंड यहाँ पे क्योंकि +3 है, यस +3 है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करना स्टार्ट हुआ, राइट? ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ओके, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इन दिस केस कि क्या होता है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये सब क्या चीज होता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, राइट? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एवरीवन नीड्स टू पॉज एंड अगेन ट्राई, ठीक है? Did everyone get the answer? Not that tough, easy one if you know the concept. तो जैसे कि हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे we are talking about paramagnetic and diamagnetic. What is the condition for paramagnetic? A very simple concept, that if you have unpaired electron, at least one unpaired electron, so you are going to get paramagnetic. Diamagnetic, all paired, right? When all the electrons are paired, you're going to get diamagnetic. Yes, you're going to get diamagnetic. All right. Okay, so what's happening here, children? That at least one unpaired electron you're going to get paramagnetic, and if all the electrons are paired, you're going to get diamagnetic. You're going to get what? Diamagnetic, right? Okay, so if I were to appear for exam, then I would have taken some risk. Okay, I know that if there is a very strong ligand, it's going to cause pairing, and when it is pairing, it is going to be diamagnetic. Now, as you see, this is a strong ligand, so this is going to cause pairing, so this is going to be paramagnetic. This is a weak ligand, this cannot cause pairing, so this is definitely, this is going to cause, okay, this is a very strong ligand, so it is going to cause pairing, so this is going to be diamagnetic. It has a chance of being diamagnetic. Okay, it has a chance. NiCl4, this is going to be paramagnetic, so this option is cancelled, right, children? Now, if I see here again, both cannot be diamagnetic. This is wrong. This again might be true because सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो रहे, एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है. ओके, बिकॉज सपोज यू हैव ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं और पेयरिंग नहीं हो पा रहे हैं, एक बच जा रहा है, तो तब तुम्हारा क्या हो सकता है? पैरामैग्नेटिक हो सकता है. पर ये वाला केस तो कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि Cl है, Cl तो कभी पेयरिंग करवाएगा ही नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है. ऐसा हो सकता है कि NiCl4 डायमैग्नेटिक है, इट इज इम्पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करवाएगा. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि NiCl4- इज पैरामैग्नेटिक,
क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, राइट. ओके, तो अगर हम ये चेक कर लें, सिर्फ हमको एक के लिए ही चेक करना है, हमको ये पता चला कि इन दोनों ऑप्शन में से हमको थोड़ा सा डाउट हो सकता है. ओके, सो बिकॉज दिस इज सेम, यू जस्ट हैव टू चेक फॉर दिस वन. या सो फटाफट से हम लोग इसको चेक करते हैं. दिस इज 28. यू नो दैट दिस इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0. ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी having the as it is number of electron, that is argon 18, 4s2 and 3d 8. Yes, you are going to have these many electrons. Yes, now if you see, okay, now what you can do, you can transfer these to here, you can cause pairing. Okay, यहाँ पे तुम लोग पेयर करवा सकते हो इसको. अगर हम लोग शिफ्ट कर दें, यहाँ पे ऐसे पेयर करवा दें और यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ दें, राइट. तो यहाँ पे ये बनाएगा. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेयरिंग हो जा रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग पेयर्ड. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक. दिस इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा. ओके, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज NiCO4, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट चिल्ड्रन, दैट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक एंड NiCl4 माइनस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. अगर तुमको देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, पर यहाँ पे जरूरी नहीं है इसको सॉल्व करना, बिकॉज Cl4 माइनस ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू कॉज पेयरिंग, और वो आउटर का ही यूज करेगा, राइट. Okay, next question on your screen. Everyone pause and try. Yeah. There are two statements given here, children. For nickel H2O whole 6 and NiCN. So it is saying that this is green in color. This is green in color. As we can see here, it is a weak ligand. It will act as a weak ligand here, because for cobalt, I told you, in cobalt in oxidation state +3, H2O is a moderate ligand and it is going to behave as a strong field ligand. But in case of nickel, it is going to be your weak ligand only. Okay. So what's happening here? So this is 26, this is 27, this is 28, right? This is 28. So if you have 28, you are having 4s2 and 3d8, right? Now 2 plus means you have to remove 2 electrons from here. So this is going to be 3d8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now here pairing is not possible, children. Here pairing is not possible. Why? Because H2O will behave as a weak ligand here. It cannot cause any pairing, right? It will not cause pairing. No pairing here. So as there is no pairing here, children, then what is happening here? We see that as there is no pairing, there are two unpaired electrons, and as there are two unpaired electrons, it can undergo DD transition, right? Remember,
about dd transition. When it can go dd transition, it is going to show us color. So the first statement is essentially correct. The first statement is correct. Yes. Okay. Now talking about this second one, children, as we see that this is -4. Okay, cyanide has a charge of -1. So 4 cyanide will give you a charge of -4. This is x. -4 equals -2, which implies x equals to again +2. So again you are going to have 3d8 electrons. You are going to have 3d8. So the same electronic configuration is going to be there. So when the same electronic configuration is there, but here there will be pairing. So this will pair up. Yes, this is going to pair up. When this is going to pair up, there is no dd transition. Why? Because there are no unpaired electrons. So when there are no unpaired electrons, there is no dd transition. Definitely the compound is going to be colorless. Definitely the compound is going to be colorless, right? So what is the conclusion that you drew from here, children? That when there is dd transition, your compound is going to be colored. And when there is no dd transition, it is going to be colorless. Yes, this is the basic key concept here, right? Then what did we understand? That as this was a weak field ligand, it did not cause pairing and there were unpaired electrons which led to the green color of the compound. Whereas this being a strong field ligand, it caused all the electrons to pair and hence it is colorless. So I can state that both statement 1 and 2 is true, right? So that is in option number B, right? So B is going to be your correct answer. That is both statement 1 and statement 2 are correct. Yes. Okay. Moving on to the next question. So what you are going to do, you are going to match the following with their electronic configuration. Again, this is a question in your 2024, right? So let's see, children, who's going to answer. Try it for a minute. Take a minute and try. If you find out the first one, you're going to get the answer because I'll show you the option as well. So just take a look at the option for once, pause it and try. Yes. Okay. Okay. Any idea, children? Okay. I'll tell you. As we see, chromium, water. Water is having charge 0, right? Water is having charge 0. So chromium is going to have x plus 0, whole charge is plus 3. So x plus 0 is equal to plus 3. This implies x equals to plus 3. Plus 3 means you have to remove electrons. You are going to remove electrons. Yes. So if you are going to remove electrons, children, then chromium has electronic configuration of argon 18, 4s1 and 3d4, 3d5. Yes, this is the electronic configuration. What are you going to do? You're going to remove 3 electrons from here. So this is going to be 1 electron from here and 2 electrons from here. So remaining 3. So the configuration is 3d3. Now as you can see, children, this is a which complex? Octahedral complex. What complex, children? Octahedral complex. How do you know that it is octahedral complex? Because the coordination number is 6 here. The coordination number is 6. So when the coordination number is 6, it is an octahedral complex. Means 6 ligands. The coordination number is 6 here. Yes. So coordination number is 6. So this is octahedral complex. And in case of octahedral complex, children, I have discussed that below you have T2G and above you have EG. Right? नीचे T2G रहता है, ऊपर EG रहता है. So you have to start filling with T2G. 3D3 है, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में फिल करना है. 1, 2, 3 हो गया काम. So this is going to be T2G3. T2G3 is in which option, children? T2G3 is only in one option, that is 2. So you are going to match
and EG is 0. EG is 0 and that is only in one option, that is A2. A2, right? So A2, I'll clear this. So A2, so if we go and see, if we go to the next slide, we see that A2 is there only in option 3, right? Only in option 3. So from there itself, you know that after solving just one, you can know that you're having the answer in option 3. You're having the answer in option 3. Your answer is present in option 3, but for your convenience, I'm going to show you another one as well. Let us talk about nickel. Okay, as everything is H2O, children, everything is H2O, so it will be the charge whatever is given here. So Fe3 plus, Fe3 plus, that is 4s2, 3d6. So if you remove, it is going to be again 3d3. Okay, 3d3. Yes, what children? It is going to be 3d3, right? 3d4, 5 children. Sorry, this is going to be 3d5. So again 1, 2, 3, 4, 5, right? So what is going to be there? This is going to be 1, 2, 3, and this is a weak field ligand, so the fourth will not come here, it's going to go above. This is going to be T2G3 EG2. So your B will be 3, A will be 2. Yes, so let's go ahead and see. B is 3, A is 2, that is only present in option number 3. So this, children, is going to be your answer. Now, what did we understand from here? That this is about your crystal field theory. Crystal field theory for octahedral complexes. For which complexes, children? If we are talking about octahedral complexes, you have T2G here and EG here. Yes. For tetrahedral, first we'll talk about. Now, there are two cases. First case, having a strong ligand. Second case, having a weak ligand. This is going to be D4. Suppose D4 is there. Okay, and you are having a strong ligand. So obviously the 1, 2, 3. 1, 2, 3. This is common for everyone. Right? This is common. Yes, it is PYQ. This is and the PYQ for 2024. All these questions have been asked in 2024 itself. Right? Okay. Now the fourth electron. The fourth electron. Here it is going in which one? Here itself. Why? Because strong field ligand. So there will be pairing. There will be pairing. D4. D4. Weak field ligand. So it is going to go above because pairing cannot take place here. Pairing cannot take place here. Right? So we'll take another example of D6. Let us see D6. Yes, we'll see D6. Okay. So if we see for D6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now this one will take strong and this one will take weak. For strong, you know that pairing will take place. So 4, 5, 6. Here pairing will not take place. So 1, 2, 5, 5th, it's done. 6th one is now going to pair here. Yes, 6th one is now going to pair here. So this is how you are going to solve for CFT. Yes. I hope this is clear to all of you children that how the pairing takes place and everything is done. Next question on your screen, everyone. Pause the screen and try the question.
Okay. So we'll see that which of the following statements are correct here. The strength of anionic ligands can be explained by crystal field theory. Is it explained by crystal field theory, children? Is it? The spectrochemical series is going to tell us about the anionic strength ligand. Okay. Let us see the other options. Okay. Let us see the next option. The valence bond theory does not give a quantitative interpretation of kinetic stability. Obviously, this is very, very correct. Yeah, because it could not give the kinetic stability. That's why we got new theories. So this valence bond theory, this is definitely correct, right? So B is there in how many options, children? B is there in 2 options. So we'll cancel these 2 options. Now, the hybridization involved is DsP2. So now, as this is an exam, children, you are not going to solve the entire thing. You know that cyanide is a strong field ligand. Cyanide is a strong field ligand. Yes, as it is a strong field ligand, you know that what is going to happen, children? There is going to be pairing. And when there is pairing, you are going to use your inner d orbitals, inner d's, right? You're going to use your inner d. So when you use your inner d, obviously you're having dsp2, right? So this can be taken into consideration. We'll see the next option, because in one option you're having bc and another option you're having bd. The possible number of isomer is 1. Is this correct? No, this is not correct. Why? We'll see that why there are more isomers as well. So isomerism will take one more class and discuss, but this is wrong. There is not one isomer, right? So hence we can say that B and C is going to be the correct answer. That is in option number A. So option A is your correct answer. That is B and C only. That is B and C only, right? Yes. Next question, children. For this, you need to have little bit of common sense and your question will be done. Okay. Any answers? What is the answer here? Yes, obviously you get easy questions in JEE Mains. If you know the concept, it's very, very easy. What is the answer? So this is going to be what, children? Argon 18, 4s2, 3d5. What, children? 3d5. Yes. So can I say that there are 5 unpaired electrons here? There are 5 unpaired electrons here, right? There are 5 unpaired electrons here. Decacarbonyl dimanganese. So if manganese is trying to form bonds, then how many bonds can it form, children? How many bonds can it form here? It is going to form bonds like this. Just a minute. And how is it going to form, children? It can form, I'll show you the structure, just a minute. Here we'll see that it is going to show octahedral. We'll see the structure, that how this bonding is being done. So let us see. This is going to be octahedral. You can see the structure here. Yes. See how manganese is bonded. As you can see, children, manganese is having 5 unpaired electrons. We have 4s2 and 3d5, right? 5 unpaired electrons. So here 5 bonds are being formed. 5. Yes.
And again, these manganese, Mn2 is there, dimanganese. So this is forming 5 bonds. This is forming how many bonds? 5 bonds, and with itself it is forming 1 bond. With itself it is forming 1 bond. So total bond each is 6. So that's why the structure is going to be octahedral. The structure is going to be octahedral. Yes? Okay, let us move on to the next question. Okay, so for these kind of questions, children, you need to have a little bit of idea about the structures. You need to have a little bit idea about the structures, and there are so many compounds given here. Let us look at their structures. So if you look at their structures, children, if you're looking at their structures, you can see that for cobalt only, okay, for cobalt you are having a carbonyl bridge. For other compounds like manganese can form 5 bonds. It is having D5. Yeah, and these also can form how many bonds? 1 2 3 4 5 6 bonds. Yeah, this is forming 6 bonds, so this can form 6 bonds. Again, ruthenium 1 2 3 4 5, this can also form 6 bonds, but this can form how many bonds, children? This is also forming 6 bonds, but here there is a carbonyl bridge. There is a carbonyl bridge. Okay, so that's why you need to have little bit idea about the structures, that where this carbonyl bridge is there, why this carbonyl bridge is there. Okay, so this, children, we are going to discuss in the next class about the carbonyl bridge, and about how back bonding takes place, pi bonding we'll see, and then also we are going to see about the isomerism questions. Okay, so you are going to revise all these concepts, and in the next class we are going to see lot more concepts, and we are remaining with what all things we'll see? We'll see bonding in carbonyl, idea about back bonding. We are also going to see your isomerism, very, very important. So here what we saw were most of the questions were from 2024. All the shifts, most of the shifts I have got. In the next class, we'll see from other years as well. Okay, so be ready for that, revise a little bit and come, and we'll continue in the next class, children. Okay, so until then, take care, children, and bye bye.